शाजिया, सारा, अगर मुझे तुम्हारा उम्र का ख्याल नहीं होता ना, मैं तुम्हें लिटरली ना अभी तुम्हारी बजा चुका होता, सीरियसली. अच्छा, एनीवेज, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. दिस इज रेक्टेंगल. ओके, फातिमा is going to answer this question. Fatima, what is this? Sir, it's a rectangle. Okay. I'll ask Shazib. Shazib, is this a rectangle? Yes. Okay. A quadrilateral. Rami, is this a rectangle? सारा ज्वाइन करके समोसे खा रही है. सारा, is this a rectangle? It is also. This is not a rectangle till it's stated. Till it's stated. Stated. It's not anything till it's stated. Suno. It's a rectangle if it says this, 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 and if it says this and this. Do you understand what I just said? I'm talking to Fatma only right now. Fatma, what am I trying to say right now? The lengths should be parallel and each angle should be 90. Fatma, what have I stated now? In the Gora's paper, do not assume. There is no assumption in the paper. जो आप लोग पेपर दे रहे हैं, इसमें कोई assumption नहीं है. मैं थोड़ी सी मसरूफ हूँ, मैं बस आ रही हूँ 2 मिनट्स में. Sara, are you talking to me? Yes sir, मैं 2 मिनट में आ रही हूँ सर. अच्छा, मैंने रिकॉर्ड पे दे लिया, बाद में खून पी लीजिएगा मेरा बाद में. जी सर, थैंक यू सो मच फॉर रिकॉर्डिंग सर. सही है सर, समझिए. हाँ, लेकिन 2 मिनट का मतलब 2 मिनट में वापस आना है. लाइव की अलग बात होती है. जी. I got it. Okay, now remember, opposites must be equal. I'm keeping the recording of this lecture, so you need to keep it there with you. Rectangle के लिए या तो उसने बोला this is a rectangle, या you have to look for 4 right angles. Opposites must be parallel and equal, and all 4 must not be same. All 4 must not be same. Done? The area of a rectangle is equal to length into breadth, and the perimeter of the rectangle is 2 lengths plus 2 breadths. That's equal to 2 times of length plus breadth, and we have 1 water cooler here. So you have 10 seconds either to take a snap of this or copy it. Either to take a snap of it or copy it. 10 seconds. No assumption. Done. This is board number 1. Board number 2 is known to you world over, all your life. Yes. Again, Fatma, what is this? Sir, I'd say quadrilateral because it's not specified. Excellent. Excellenta. Excellent. It is definitely a quadrilateral. It's got 4 sides. यहाँ कुछ नहीं बोला कि बराबर हैं. I had not stated they were equal. Now you know it's equal. But again, even if it's equal, this is not a square. It will only be confirmed if it's a square. It's got 4 internal 90-degree angles. And unlike the rectangle, the square has one more characteristic.
that the diagonals intersect at 90. In the case of a rectangle, the diagonals do not intersect at 90. Excuse me. J. खैरियत? खड़े होके कराओगे काम तो ठीक है, वरना जनरेटर खोलने की जरूरत नहीं है, खड़े होके कराओगे बस। ठीक है, ओके डन, बाय। ओके बाय। नहीं, अभी कोई खर्चा है नहीं, अभी आप काम करें उसके मुताबिक मैं खर्चा बताऊंगा। थैंक यू जी। रेक्टेंगल्स के अंदर दोनों डायगोनल्स बराबर हैं, स्क्वायर के अंदर भी दोनों डायगोनल्स बराबर हैं, ए बी सी डी, पी क्यू आर एस बराबर हैं डायगोनल्स। बट इस बंदे की खास बात यह है कि द डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट 90। ओके, so the area of a square is length into length, length. Perimeter is 4 times the length. Length. This is your square. 4 resulting square triangles. 4 resulting triangles all have equal area. I have recorded this lecture, don't miss it. Each rectangle, the square, each triangle has equal area. Through experience, we found out that the area of the triangle here and here are obviously equal. In this case, we have congruent triangles. Congruent bole to? Congruent means that they are exactly the same. Here, these two are same. These two are not the same to the other two. But their area is the same. I'm giving you a magic right now. The area of this triangle is a quarter of length into breadth. And the area of this triangle is also a quarter of length into breadth. The area of this is also quarter of length into breadth, which is length into length, L squared. So area यहाँ L squared है, perimeter 4L है. This is a quarter. This triangle is a quarter of the rectangle square. That means 1/4 of L squared. In this case, it is, this triangle is half into, the base is length and the height is half of H or half of B, which is 1/4 of LB. Now, if Sara Bilgrami is not here in the class, her loss, because she could have asked a question now. अब रटने पड़ेंगे. This is a quarter of the area of a rectangle. Area of a rectangle was length into breadth. Area of a rectangle was? So a quarter of length into breadth. So if this is a quarter and this is a quarter, these two make half. कितनी देर से आया भाई? So what we understand is, this is a quarter and this is a quarter, and these two quarters make a half. So the other length into breadth is another quarter and quarter, another half. So this is also 1/4 of L into B. This is also 1/4 of L into B. This is also 1/4 of L into B. And this is also 1/4 of L into B. Although they are different shapes,
Although they are differently shaped, their area is the same. PMB is similar to exactly the same as SRB, RM, SRM. SRM and PQM, they're congruent. RMQ and SMP, they are congruent. But area wise, all four are the same. Now, this concept is 1 mark, 1 question in your SAT, GMAT, or GRE, whichever test you are giving. 1 mark, 1 question. The difference in rectangles and squares is that in चारों की area same है, इनकी भी same है. ये दोनों same लगते नहीं है, लेकिन area wise same है. ये दोनों congruent है, exactly the same है. ये चारों congruent है, exactly the same. This is board number 2. Board number 3. Sara Bilgrami sat on the square and it became a, yes, Fatma. Sir, I'll say quadrilateral again. Very good. She's not going on the assumption level. This is equal to this. This is equal to this. And Inky, Pinky, Ponky, Donkey, all four are same. Now, Sarah, what is this? Is the family of parallelogram. Parallelogram की family के अंदर square भी आता है, rectangle भी आता है. Number 3, purely parallelograms with different lengths and rhombuses आते हैं. Okay, ये parallelogram की family है. But this guy is a rhombus. It's a slanted square. It's a slanted square. A slanted square is like a square, but Sarah sat on it. Thus, when I come back, I explain to you that this guy is a diagonal and this guy is also a diagonal. Now remember, the square that we were dealing with, the diagonals intersected at 90 in the case of a square. The diagonals intersect at 90 in this case of a square and also in the case of a rhombus. Indeed, the area of a rhombus, although it comes under the parallelogram family, is half times of x into y. That is half times of product of diagonals. Half times product of diagonals. This is one diagonal. Its value is y. And this is the other diagonal. Its value is x. And that's what area is all about. This is board number 3. Now start copying from number 3, then go to number 2, and then go to number 1. Jaldi se, time nishte. But remember, perimeter of a rhombus is L, 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 L. 4 times of L. They are same. Maafi mushkil. Kullu same. Kullu same.
जल्दी कॉपी करें. You got 1 minute to copy this on the board, and then I go on to board number 2, then I go on to board number 1, and then I start solids. Is Sara Bilgrami back or not? फैजान. आई एम हियर, मैं यही हूँ सर. ओके फैजान, आपको समझ में आ रहा है बेटा या नहीं आ रहा? फैजान मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करें. इस नंबर पे व्हाट्सएप करें. सारा जो करा रहा हूं कॉपी करें. लेक्चर कॉपी हो रहा है, रिकॉर्डिंग पे लेक्चर. मैं कर रही हूँ सर. यस सर. Length of the diagonals है. X and Y diagonals है. X and Y is the length of the diagonals. फैजान बेटा बिल्कुल 100% आ रहा है, कोई तकल्लुफ तो नहीं है? अच्छा, मैं आपको आपकी आवाज अगर आपकी आवाज मुझे सुननी है तो मैं आपको स्पीकर पे डाल दूं, इफ यू डोंट माइंड. ये व्हाट्सएप की कॉल पे मैं आपको डाल दूं ताकि मुझे आपकी आवाज भी आ जाए यस की. ठीक है, आपको व्हाट्सएप की कॉल पे रखा हुआ है मैंने. ठीक है, ताकि मुझे यस और नो की आवाज आ जाए आपकी. ठीक है, ओके. फैजान क्लियर है? अहमद अदनान क्लियर? डन सर, हो गया सर. Yes, अहमद sir. अदनान हो गया, समझ में आ गया? Yes, sir. रिजल्ट समझ में आ रहे हैं? खिजर रिजवान समझ में आ रहा है? Yes, sir. मोहम्मद हारिस समझ में आ रहा है? मोहम्मद हारिस. Yes, sir. ओके कूल. नाउ मेरा लाडला तला लाडले समझ में आ रहा है? अरशद. Yes, sir. ओके. वजदान नोटी बॉय. सारा बिलग्रामी समझ में आ रहा है? बाउंसर जा रहे हैं? सर समझ में आ रहे हैं, बस एक चीज मुझे समझ नहीं आ रही है. थर्ड पे आपने क्या लिखा है? पैरेलल. बात है. अब आप एक काम करें, पहले कॉपी करें. ठीक है, ये लेक्चर रिकॉर्डिंग पे कॉपी करें. पैरेललोग्राम को बता दें सर. ये अब ये बोर्ड नंबर 2 है, ये बोर्ड नंबर 2 कॉपी करें सब जल्दी से. सब मुझे समझ में नहीं आया. क्या नहीं आ रहा समझ में सारा? सब वो आपने जो ये लिखा है ना 1 2 थर्ड वाला क्या था सर लिखा हुआ है? थर्ड लिखा पैरेललोग्राम डिफरेंट. ओके हाँ सही है. ओके सर. बता देता हूं, आपको बताता हूं अभी. डन सर, हो गया सर. दिस इज बोर्ड नंबर 2. बोर्ड नंबर 2 कॉपी करें फैजान. जो चीज आ रही है लिखे, कॉपी करें जितना समझ में आ रहा है. उसके बाद 10 चीजें और पढ़ानी है मुझे आपको. हरी अप. Tala Arshad, are you with me? Board number 2. Are you with me? Yes, sir. Rectangle and that's a square. There's a difference. Okay? But remember, they got 4 internal right angle triangles. 4 internal right angles. Okay? Both of them. That's the idea. Rhombus में ये नहीं था. Coming Done, back sir. to board, everybody, eyes on the board. एक बहुत इंटरेस्टिंग सी saying है, the adjacent sides add up to be 180. याद रखना ये चारों sides add up करते हैं 360 के लिए. Adjacent sides जो adjacent sides हैं, sorry, this and this is single and this. These opposites are equal. Say they are 130 degrees each, and this is 50 and this is 50. When you bisect it, this will become 25 and this will become 25. This will become 25 and this will become 25. When you bisect it, ये 65 हो जाएगा, ये भी 65 हो जाएगा, ये भी 65 हो जाएगा, ये भी 65 हो जाएगा. अब इनको ऐड करो 90 के साथ तो ये इंटरनल 180 डिग्रीज बन जाएगा.
165 plus 25 is 90. 90 plus 90 is 180. That's happened with all of them. And इसकी खास बात ये है, all 4 triangles are smiley faces. They are all congruent. They are all congruent. पहले से करके रखोगे तो आएगा. एग्जाम में बैठ के सोचने का टाइम नहीं होता आपके पास. ठीक है? Copy this again. Copy this diagram. Write these figures down. You too. अच्छा, ये congruent से क्या मतलब? Congruent का मतलब जानू exactly the same है. 90, अच्छा, same. 90, 90, 90, 65, 65, 25, 25, 65, 90, 25, 65, 90. And then this length is equal to this length. This length is equal to this length. All 4 lengths are equal. And then Inky Pinky Ponky is equal to Inky Pinky Ponky. And Donkey Donkey is equal to Donkey Donkey. Okay, that's what it means. Congruent means exactly the same. एक होता है similar, एक होता है congruent. ये है सारा. ये सारा के बाल है. और ये है मिनी सारा. Horrible. ये मिनी सारा के बाल है. ये है similar. They are not congruent. They are not twins. Big sister, Yes. younger sister. Yes. Number 2, copy 2. Copy 2 now. Copy 2. 2 में कुछ रह गया, copy करो, फिर 1 copy करो. सर जो आ रहा था समझ में वही मैंने कॉपी कर लिया. Good. Okay. सारा और भी लोग हैं अच्छा बैठे हुए आपके साथ. Copy number 1. Copy number 1 right now. हटाओ ये भी मिटाओ. 10 seconds. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, nishte. Okay, next. Let's go on to this. Faizan, mere saath ho. This is a parallelogram. This is a parallelogram. One of the identification of parallelogram is pure parallelogram with different lengths. Opposites are parallel and equal. Faizan, आवाज आ रही है? And ये एक length है, इसको base कह देते हैं. ठीक है? और इसको कहते हैं slanted height या slanted length. ये base है. Area of a parallelogram is given as base into height. ये मैं इसलिए दे रहा हूं कि अगर आ जाए तो फॉर्मूला बैठ के तोड़ के नहीं बनाना पड़े. एरिया ऑफ अ ट्राइंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. ये एक ट्राइंगल है और ये दूसरा है. इसका भी बेस b है और इसकी भी हाइट h है. तो ये एक और हो गया हाफ बेस इंटू हाइट. हाफ बेस इंटू हाइट प्लस हाफ बेस इंटू हाइट is equal to 1 base into height. 1 base into height का मतलब होता है base into height. So the area of a parallelogram is equal to base into height. Okay, opposites are parallel and equal, but all 4 sides are not equal. If all 4 sides were equal, it would have been a rhombus. It would have been a rhombus. और rhombus और parallelogram की एक और distinguishing characteristic है. Rhombus की ये line of symmetry होती है. यानी कि what is a line of symmetry? Book देना. A line of symmetry is this. Sir, in rhombus, are the sides parallel? Yes, 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 they are parallel. Opposites are parallel, beta. Opposites are parallel. This is the line of symmetry. मतलब
सर ये लाइन ऑफ सिमेट्री है? हाँ बेटा ये लाइन ऑफ सिमेट्री है. You can flip it and cover it. It will divide the figure into equal pieces. So on board number 5, this is board number 4, I introduce you to the concept of symmetrical figures. Square has got 1 line of symmetry, 2 lines of symmetry, 3 lines of symmetry, 4 lines of symmetry. Rectangle, this is rectangle. This is, as my friends say, square. Square. Rectangle, only 2 lines of symmetry. 2 lines of symmetry. जिसके जितने फिगर्स हैं और जितनी लाइन ऑफ सिमेट्रीज है वो रेगुलर बन जाता है. क्या मतलब रेगुलर? रेगुलर का मतलब है जितने फिगर्स हैं, ये एक साइड है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, ये चौथी है. 4 sides, 4 lines of symmetry. वाहिद, अतनैन, तलाता, अरबा. 4 lines of symmetry. This is a regular figure. Come back to the triangle world. If this is an equilateral triangle, it has got wahid, atnain, talata, 3 lines of symmetry and 3 sides. Equilateral triangle is a regular figure. Okay, I'm trying to give you maximum and minimum time. Rectangle is not a symmetrical figure, is not a regular figure. It has got only 2 lines of symmetry. And I know थोड़ी देर बाद सारा की आवाज आएगी, वो बोलेगी सर क्या ये लाइन ऑफ सिमेट्री है? ये नहीं सारा. रेक्टेंगल की ये लाइन ऑफ सिमेट्री इसलिए नहीं है क्योंकि हम इसका पेपर चोरी करेंगे. पेपर ला के दोस्तों कर. ठीक है, ये एक रेक्टेंगल है. दिस इज अ रेक्टेंगल. एवरीबॉडी आईज ऑन द बोर्ड. इसको जब मैं ऐसे फोल्ड करने लगूं तो ये एग्जैक्ट लैपिंग नहीं करता. ये मैं ऐसे करना शुरू करूं, ये एग्जैक्ट लैपिंग नहीं करता. ये एक आगे जा रहा है, एक पीछे जा रहा है. कैन यू सी? ये आगे पीछे जा रहा है. लेकिन मैं अगर ऐसे करूं तो यस, और ऐसे करूं तो यस. So this is a line of symmetry, yes. This is a line of symmetry, yes. But this is not, and this is not, because you cannot exact lap it. You cannot exact lap it. On the other hand, if we make this into a square, exact lapping, exact lapping, exact lapping, exact lapping. What? Yes, they can be exactly lapping one another. Wahid, Atnan, Talata, Arba. 4. Like this. 1 like this. Okay, ये हो गया. अब ये करते हैं, इसको ऐसे लैप कर लेते हैं, एग्जैक्ट हो गया. फिर इसको ऐसे कर लेते हैं, एग्जैक्ट हो गया. और फिर इसको ऐसे कर लेते हैं, एग्जैक्ट हो गया. तो स्क्वायर की 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री है, और जिसके जितने फिगर हैं n इज इक्वल टू 4. n का मतलब कितने साइड्स हैं या कितने एंगल्स हैं. अगर 4 साइड्स हैं और 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री है तो ये बच्चा क्या निकलता है? रेगुलर फिगर. इक्विलैटरल ट्रायंगल्स 3 sides, 3 sides and 3 lines of symmetry. वाहिद, अतनैन, तलाता. तो दिस इज अ रेगुलर फिगर. फैजी मेरे साथ हो, फैजान मेरे साथ हो, नहीं हो? गुड. This Fatma, are you with me? Yes, sir. Ahmed? Yes, sir. Ayan? Yes, sir. Khizr? Yes, Haris? sir. Sara? Yes, sir. Tala, Wajdan? Yes, sir. Yes, sir. बाउंसर तो नहीं जा रहा? तला बाउंसर तो नहीं जा रहा? No, sir. मुश्किल लग रहा है? No, Yes? sir. Okay, so this is line of symmetry rectangle, this is line of symmetry, okay? This is
4. This is number 5. Board number 5. Board number 6. बहुत सर है। फोर्थ वाला बहुत- कॉपी नहीं बहुत है। किया है। कॉपी 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 कॉपी। बोर्ड नंबर 4 कॉपी करें। बोर्ड नंबर 4 कॉपी करें, बोर्ड नंबर 5 कॉपी करें जल्दी से। पहले बोर्ड नंबर 4 कॉपी करें, फिर बोर्ड नंबर 5 कॉपी करें। जल्दी से। Then I'll go on to the next one, okay? Faizi, are you with me? Faizan, are you with me? फैजान समझ में आ रहा है? सर कर लिया सर। Everybody copied? Did you guess time? Sir, can you read the stuff you wrote in the corner? Opposite are parallel and equal, but all 4 sides are not equal. That's board number 4 done. Everybody with me? Khizar mere saath ho, Ahmed mere saath ho, Fatma. Yeah, sir. Board number 5. गायब है? आए में लोग कितनी देर बनाए? मुझे बोलो 2-5 मिनट दे दे। नीचे आ जाए, ऊपर आ जाए। बोलो 5 मिनट तो लगेंगे। ठीक है। बिकॉज़ इनको काम बहुत देना है, मुझे लोगों को बड़ा काम देना है। ठीक है? Okay, time up, guys. Time up. I'm going to go on the next one. वैसी रिकॉर्ड पे आप कॉपी कर लीजिएगा। बिठाओ जल्दी से। Okay, now we got to cover more stuff. Now, rectangles, squares, triangles, rhombuses, parallelograms, they are all 2-dimensional, cannot be touched. यानी उसमें 3rd dimension की कमी है. However, this is a 3-dimensional figure, like a box. It can be touched. It can be touched. And before I go ahead, I will label this A, B, C, D, E, F, G, H. Okay? I threw Fatma off the edge. अंग्रेजी का वर्ड इस्तेमाल किया सेंटेंस I threw Fatma off the edge of the roof. I use the word edge. A solid has 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. I repeat myself. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 edges. English का word है used at least 20 times in your past papers. The word used is edges. Okay? Now, how many faces? This is the face, is called the front. The front is equal to back, area-wise. The front face, the back face. The top is equal to bottom.
Remember, we're dealing with a solid right now. The top is equal to the bottom. The right is definitely equal to the left. So we have in a solid rectangular figure, it's called a rectangular solid. The word uses has got 12 edges and 6 faces. 6 faces. You have 20 seconds to copy this now. ये 2Ds है, 2 dimension cannot be touched. 3 dimension can be नीचे touched. क्या लिखा है आपने? कैन नॉट बी सॉलिड. कैन नॉट बी सॉलिड. cannot be touched लिखा है sweetheart. Touched. समझ नहीं आया. Touched. Touch me not, Bashiria. Okay. So remember one thing, I'm talking to you. Can you hear me? Everybody look here. Everybody look here. ये एक surface है. इसके पास length है. इसके पास breadth है. और इसके पास width है. Can you see the width? Can you see the width? अगर ये width नहीं होती, ये rectangle होता और ये touchable नहीं था. ये सिर्फ describable था. You can only touch a 3-dimensional figure. This is the 3 dimension. Length, breadth, and the 3rd dimension, the width. Copy this. AC on कर दिया पर? हाँ देखो बैठा दो खबर. बोलो 2 मिनट में आ रहे. Done, sir. Cool. अभी तक ये ले लो अपने पास रखो. हो गया. You want this to copy? Anybody wants to copy? It's on record. This lecture is on record. You can take it from OS Hub. Okay? Cool हो गया? Now पकड़ो अपने पास. मोहब्बत हो. Next. Rectangular solid की जब बात करते हैं हम लोग, so we make it very specific. Length, width, and height. Yeah, breadth and height. Everything is 3-dimensional here. Okay? So when we talk about the total surface area, the total surface area is equal to front. फैजान मेरे साथ हो, बाउंसर है फैजान. फैजान सो गया. फैजान आवाज नहीं आ रही. फैजान फ्रंट प्लस बैक प्लस लेफ्ट साइड प्लस राइट साइड. लेफ्ट प्लस राइट plus top plus bottom. Remember, they are all rectangles. واحد اثنين ثلاثة أربعة. واحد اثنين ثلاثة أربعة. واحد اثنين ثلاثة أربعة. They are all rectangles. Okay. So we understand that the total surface area is equal to length plus into height. ये front होगी length into height. Length into height. और back भी length into height. राइट साइड क्या है? ब्रेथ इंटू हाइट. ब्रेथ इंटू हाइट प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस ब्रेथ इंटू हाइट. क्या मतलब? राइट साइड इज ब्रेथ इंटू हाइट और लेफ्ट साइड भी ब्रेथ इंटू हाइट है. प्लस टॉप प्लस बॉटम. टॉप इज लेंथ इंटू ब्रेथ. लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ. So it will become 2 times of length into height plus 2 times of length into breadth plus 2 times of breadth into height. 6 surface areas. अगर solid है. लेकिन अगर वो कहता है कि open from the top, तो एक top को include नहीं करना. और जो volume होती है इसकी होती है length into breadth into height. Length into breadth into height. Okay? The volume is equal to length into breadth into height. So we understand
that the volume is length, breadth into height. It's like base area into height. Base area, जो मैं बोलता जा रहा हूं उसे याद रखना. Base area into height. The multiplication of length into breadth is the base into the height. Length, breadth, height. That's called volume. But it can be cross-sectional area into the thing, breadth into height into length. Same shit. Same thing. Okay? So it's going to be breadth into height into the length, or length into breadth into height. Same stuff. Okay? Just revising. This is O-level stuff. Okay? This is number 6. This is number 7. Part of the lecture today. सर आप किसको इंक्लूड करने को मना कर रहे थे कि हम किसको नहीं ओपन है स्वीटी, अगर ऊपर से कैन खुला हुआ है तो टोटल सरफेस एरिया में नहीं इंक्लूड होगा, वॉल्यूम में तो इंक्लूड होगा. ओके, अगर मैं पूछूं टोटल सरफेस एरिया क्या, अगर कोई चीज खुली हुई है तो उसको सरफेस एरिया नहीं काउंट करोगे. याद रखना. मैं एक पास्ट पेपर का सवाल दिखाता हूं तुम लोग को. ये सवाल इसने पूछा ना आंटी ने, तो मैं एक सवाल बताता हूं. ये सवाल आया था ये, and only 1% of the people were able to solve it. This is a baby's play area, and this area और उसके पीछे वाली एरिया खुली हुई है. क्या है? There's a drill, it's drilled through. It's an open area where the kids go inside. When the baby goes inside here, with his legs here, hands here, the baby goes inside from the other side. It's open. So when they asked, they wanted to paint it, they took the whole of top and the whole of bottom. They took the whole of right and they took the whole of right, left. When they came to the front, they found the area of this side minus the area of the circle, and the other side also the same. Because वो हवा थी, अंदर से बच्चे tunnel था, tunnel, it was a tunnel. But again, inside it was a curved surface area, which 99% of the people did not include. When they asked you for the total surface area, you had to find the total surface area of this minus 2 circles, box minus 2 circles, plus the curved surface area of a cylinder. अपने आप को इस maturity पे लानी है तुमने हमने. Okay, you go in that 1% of understanding this. I will refer to it again, so relax. But those people who understand why was the curved surface area of a cylinder added, that's because this place was made of metal. It's a solid box and it was all curved. तो इस circle को minus किया और उस circle को minus किया area में से. फिर देखा कि ये पूरा एक tunnel बन रहा है. उस tunnel की भी तो surface area को paint करना था ना. They can't leave a metal unpainted. So they wanted to know at the rate of $2 per unit meter cubed. What was the cost of painting this entire thing? Top को paint किया, bottom को किया, right को किया, left को किया, front को और back को किया, 2 circle minus कर दिए. फिर जो अंदर का tunnel है, that tunnel had to be added. The curved surface area, it's the curved surface area, the goal wala part, that has to be added. So when you talk about this, we'll come back to the next level. I'm giving you an assignment right now. तो ये कॉपी कर ले पहले. कॉपी करें, आप ये कॉपी करें, पहले आप ये कॉपी करें. नंबर 6 कॉपी करें. 7 कहां गया? सॉरी, पहले आप 6 कॉपी करें. लास्ट वाला रह गया सिर्फ, ये वाला लास्ट वाला रह गया, बाकी तो कर लिए हैं. ये 7, यस, ये वाला हो गया. People here, Sara, can you wait? Sorry. Everybody copied 6? Okay. Has everybody copied 7?
Please copy 7 first, फिर 8 देना. 7 हो गया. Fatma, copy this beta. Yeah, sir, I've copied it. Okay. RS, copy it. Okay. Then number 7 ले लो. Number 7 फातिमा समझना है. इसकी तस्वीर रख लो अपने पास. This is the maturity level you need to reach as far as solids are concerned. It came in the past simple question and the review was that only 1% got it right. 1%. It's a level 6 GMAT, level 9 का GMAT का question है. और level 6 का SAT का question. There's one more board I need to do with you. करो कॉपी करो, don't waste time बेटा. तुम्हें बाउंसर जा रहा होगा कुछ, it's okay. तो मसला नहीं. बाउंसर जा रहा है थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा नहीं, वो बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा. हाँ, थोड़ा बाउंसर होना चाहिए, थोड़ा होना चाहिए. डन सर, हो गया. सारा बिलग्रामी बहुत तेज काम कर रही हो आज. कहाँ जाना है तुम्हें? चक्कर क्या? सारा जी सर. कहाँ जाना है? कहीं जाना है सर. हाँ, लग रहा है बहुत जल्दी में मोहतरमा. Very nice. I can read things, you know that. This shows the experience. बताओ. Okay, last figure for today. And then I'm giving you an assignment. फैजान मेरे साथ हो, बाउंसर हो. फैजान. फैजान. Okay. Okay. पेज नंबर 2 चीजें और रह गई हैं, ये आप लिख लें. दिस इज बोर्ड नंबर 9. बोर्ड नंबर 9. दिस इज अनदर सॉलिड. इट्स अ 3-dimension figure. इट्स कॉल्ड अ बॉल और अ स्फीयर. याद रखिएगा, वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 pi r cubed. The total surface area of a sphere, a ball, is 4 pi r squared. Done. Then this is the last part and it's called a cylinder. The total surface area of a cylinder is equal to top circle plus bottom circle plus curved surface area of cylinder. That is equal to pi r squared. If the radius is, eyes on the board, r, it's pi r squared on the top, pi r squared on the bottom, plus curved surface area would be equal to 2 pi r h, where h is the height. H is the height. The volume is equal to pi r squared h, which is actually the base area multiplied by height. This is the base area multiplied by the height. Base area multiplied by height. Okay, but if your cylinder is lying down, please kindly, like a Pathan, an idiot, stop calling it height. This will be length. It's going to be called पेंडू की तरह ना बैठ के इसको ये नहीं कहते ना जी कर्व्ड सरफेस एरिया इनटू हाइट. कोई चीज रिलेटिव ही होती है, उसे लेंथ कहते हैं. pi r squared L. Okay, the volume. In this case, the curved surface area is pi. This is called the T curved surface area. Okay. Okay. Now remember, this is a sphere. When you cut the sphere into half, it becomes a hemisphere. I'm just introducing this to you
because when we start doing the questions, you will understand this better. This को ये टोपी होती है ना, टोपी, the cap that you wear. Okay, so this is 4/3. इसकी वॉल्यूम होगी 4/3 pi r squared की आधी. That's 2/3. Volume would be equal to 2/3 pi r cubed. Pi r cubed. But the total surface area would be curved, would be 2 pi r squared, and the circle bottom will be equal to pi r squared. ये मैं आपको दोबारा कराऊंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर. इसको मैं TBC लिख रहा हूं, to be continued. This is board number 9, I think, if I'm not wrong. Now I'm giving you an assignment, everybody. I'm giving you an assignment right now. Write down the page number. The pages are given by page number 240 of your book. And page number 243, 244, but you need to understand the difference. Rectangular solid okay, बंद कर दो सर. This is a rectangular solid which was called length, breadth and height, and this baby is called a cuboid, and this baby is called a cube. What's the difference? Length, length, length. Same. Volume of a cube, yes. It's a rectangular solid, 3-dimensional, you can touch it, is L cubed. And the total surface area is equal to L squared, back L squared, bottom L squared. It's called 6L squared. और मैं आपको आखिरी बात देते हुए जा रहा हूं. Find the length of a cube whose total surface area equals its volume. The cube's total surface area equals its volume. ऐसे सिनारियो के अंदर लिखोगे 6L squared is the total surface area, volume is L cubed. Let's write it. L cubed is equal to 6L squared. Square root both sides. उड़ गया यहाँ. Sorry. Divide everything by L squared. आखिर में L रह जाएगा. L is equal to 6. क्या मतलब? 6 into 6 into 6. 6 into 6 into 6 is 216. याद है मुबीन ने सिखाया था 6 cubed is 216. Yes. The volume is 216 and the total surface area is also 216 centimeter squared. This part has to be ratification. This is the only question you will not be able to have time to calculate in an exam. जब मैंने आपको कहा था 6 cubed याद रखना, तो उसका मतलब क्या था कि excuse me, the total surface area of a cube is equal to its volume. So 6 into 6 into 6 is 216. So we understood that L cubed is equal to 6L squared. I'll do this again for the next class. Okay, I'm giving you the assignment. Your assignment is page number 243. I repeat myself, page number 240, 243 and 244. इस पे ख्वार होना शुरू हो, बाकी मैं दोबारा कंटिन्यू करूंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर. ठीक है? Any question?
No, sir. सर 9 और ये वाला आप दोबारा करवाएंगे ना, मैं बिकॉज मैं लिख नहीं रही हूँ तो वो मैं बात। आप पहले कॉपी कर लें इसको, आप अच्छा, बोलेंगे 2 दफा पढ़ा दें, मैं 2 दफा पढ़ा दूंगा, ठीक है? बट अभी मैं आपको सिर्फ डेटा दे रहा हूँ. दिस इज वेरी हेल्पफुल फॉर पीपल लाइक शाजेब एंड पीपल लाइक फातिमा. जो भी न्यू कमर्स है यहाँ इस क्लास में, आपके लिए जरा सा बाउंसर जाएगा. बाकी दूसरों के लिए ये काम की चीजें हैं, ये आप पकड़ लें, अपने पास रखो, ठीक है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज मनी. Okay, nobody's going to give you this. Okay, this is past papers. Actually, I've got some guests coming over right now. They're upstairs. I will meet you guys inshallah tomorrow or day after inshallah. Okay? Is that clear? Kal ya day after tomorrow after 7 p.m. Okay? Continue from here whatever. But मैंने pages दे दिए. फैजान, मैं आपसे थोड़ी देर बाद बात करता हूँ, ठीक है बेटा? नहीं है, अंदर है ये हम पढ़ो. कॉपी दिस, एनी बोर्ड दैट यू राइट प्लीज कॉपी इट. बोर्ड बंद कर देना. जो कॉपी करना है यहाँ खड़ा हुआ है, जो कॉपी करना है कॉपी कर लेना. मैं आपको, अगर आपको चाहिए तो 10 मिनट बाद वापस आऊंगा. तो कैन वी लीव सर? खत्म है ऑलमोस्ट. बुक आपको खरीदनी है ये बुक खरीदनी सर फ्रांस बैठे हैं. हाँ नहीं चलेगा सर. वेस्ट होंगे. हाँ वो जाएंगे ना सारे. शेडिंग में मीटिंग एंड कर, बंद हो जाए.